एक तस्वीर दिखाएंगे। अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की जा रही है शुभांशु की तरफ से, और देखिए ये कैसे लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है, वो हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। Axiom-4 मिशन है ये। Here's that confirmation from Mission Control, right on schedule. So the next major visual milestone we're likely to have from the outside of the spacecraft is going to be venting. तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि तकनीकी खराबी पिछले कुछ बार से होती आई, जिसकी वजह से ये मिशन टलता रहा, लेकिन आखिरकार आज वो शुभ दिन आ गया है जिस दिन शुभांशु शुक्ला Axiom-4 मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद ये लॉन्च होगा और उसके बाद सीधे शुभांशु अंतरिक्ष में होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के लिए ये बेहद गौरव वाला क्षण है, बहुत ही खास पल है। नासा Axiom-4 मिशन की ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी बार स्पेस जा रहा है कोई भारतीय, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला Axiom-4 मिशन में शामिल हैं और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 6 दफा ये मिशन पूरा करने की तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन कई बार तकनीकी खराबी होने की वजह से मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लॉन्च नहीं हो पाया और आखिरकार आज ये दिन आ ही गया है। काउंटडाउन आप देख पा रहे होंगे, 37, 36, 35 सेकंड्स के काउंटडाउन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और जैसे ही ये काउंटडाउन 0 तक पहुंचेगा, वैसे ही ये एरोस्पेस सीधे स्पेस में पहुंच जाएगा। शुभांशु शुक्ला भी Axiom-4 मिशन में शामिल हैं। ये पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है, खास पल है, जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत ही खास पल, बहुत ही खास क्षण है। 3, 2, 1, ignition and lift For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T+30 seconds into flight with the Axiom-4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin. And call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason they remain flight mode, Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as माता जी आप भावोगे आपको मैं आज आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेने दो। आप प्लीज सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। As well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T+2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. तो कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर की ये लाइव तस्वीरें थी। अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हैं भारतीय शुभांशु शुक्ला और भारत के लिए भी ये बहुत ही गौरव वाला पल है, क्षण है।
incredible views on our screen here too, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX-4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shut down. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T+4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage with a 220,000-pound thrust engine takes a while before the Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T+7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can watch Stage 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage सेना 1 के is ग्रुप now कैप्टन और transonic भारतीय on its way back अंतरिक्ष to यात्री LZ-1, शुभांशु which शुक्ला is ने just आज इतिहास रचा है। 41 वर्ष पहले लगातार 8 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला, और इसीलिए आप उनके परिजनों को देख पा रहे होंगे, माता पिता को देख पा रहे होंगे, जो आंखों में आंसू लिए वहां पर उनके लिए प्रार्थना करते हुए आपको दिख रहे होंगे। नासा के Axiom-4 मिशन की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की तस्वीरें हैं और भारत के लिए भी गौरवान्वित करने वाला पल है।